करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो डिफाइन किया सकता है वो है नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट सेकेंड। सो हम ये कह सकते हैं चेंज ऑफ जितने हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे इन अ सेकेंड इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। द यूनिट ऑफ एम्पेयर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, 1 एम्पेयर। और इसको लिख भी सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम पर सेकेंड। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट दो किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट हमारे पास जो है, जैसे ये है डायरेक्ट करंट, हमारे पास डायरेक्ट करंट जो है वो होता है जब हमारे पास करंट जो है फ्लो जो है वो कांस्टेंट है, चार्ज जो हमारा चेंज ऑफ जो हमारे चार्जेस हैं वो उसकी जो फ्लोइंग रेट है वो कांस्टेंट है इन विद टाइम, इट्स कॉल्ड डीसी करंट। एंड अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये साइनसॉइडल फॉर्म के अंदर ये जो है वेरी करता है विद टाइम। सो इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। हमारे पास नेगेटिव प्लेट्स अगर देखा जाए तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवे मूव करते हैं, और हमारे पास जो प्रोटॉन्स जो हमारे प्रोटॉन्स जो होते हैं, हमारे पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो अवे मूव करते हैं, और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो टूवर्ड मूव करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक कंडक्टर है, उसका जो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है ऑफ 5 एम्पेयर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासिस इन अ फिक्स पॉइंट ऑन अ कंडक्टर इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, एक करंट जो होता है वो होता है dq/dt। तो हमें इससे पता लगेगा चार्जेस। तो हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट हमने क्या किया कि हमने चार्जेस कैलकुलेट कर लिए। हमारे पास कितने नंबर ऑफ कूलम्स हमें फ्लो कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कूलम्स हमारे पास हैं उस फिक्स पॉइंट के ऊपर। तो हमने लिख दिया 5 एम्पियर। सो बराबर होगा हमारे पास 5 कूलम्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाई, बेसिकली हमने 5 एम्पियर्स है, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें इसको तो हमारे dq/dt है, और ये हमारे पास I है। अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम t को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं q = I × t। और हमें पता है कि ये 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर हो सकता है, एम्पियर को हम ले सकते हैं कूलम पर सेकेंड। और क्योंकि हमें पता है ये पर सेकंड होता है और हमें यहाँ पर 1 मिनट कैलकुलेट करना है, तो हमने 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमने लिख दिया। तो हमारे पास आया 300 कूलम्स पर मिनट। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ हमारे जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो पास हो रहे होंगे। इन चार्जेस के ज़रिए हमने इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, और हमें पता है कि एक चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज, एक चार्ज है, नंबर ऑफ जो चार्ज के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 300 कूलम पर मिनट। हमने ये कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ चार्जेस। ये हमारे पास नंबर ऑफ कूलम्स पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने ये कैलकुलेट किया था कि कितना चार्ज होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर हम इसको डिवाइड कर दें अपने जो हमने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ चार्ज को, तो हम इसके कैलकुलेट मिल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पर मिनट फ्लो कर रहे हैं। हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई 4600 इलेक्ट्रॉन्स। इतने चार्ज के ऊपर कितने, मतलब ये 4600 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके चार्जेस कितने होंगे। अब हमारे पास जो इसमें नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन है कि इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास यहाँ पर बता दिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तो ये हमारे पास ये नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया। प्रोटॉन्स होंगे तो ये पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे बता दिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम्स। अब हमारे पास 4600 है, तो हम सीधा 4600 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ चार्जेस से, तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ चार्जेस हमें मिल जाएंगे। एग्जाम्पल 1.3, total charge entering a terminal is given by q = 5t sin 4 pi t millicoulombs। फर्स्ट यहाँ पे डिफाइन करना है कि मिली है, मिली इज शोइंग दैट
10 raised to power minus 3. Calculate the current at t is equals to 0.5 seconds. हमें स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है जिस पे हमें इसको कैलकुलेट करना है कि करंट कितना होगा. फर्स्ट हमें पता है कि जो करंट होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी. क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया. डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्योंकि 5t t साइन 4 पाई टी है यहाँ पे, दिस इज u एंड दिस इज v. तो ये u है एंड दिस इज v. And so when you differentiate 5 sine 4 pi t is just right, you have to do right now. The constant will come 5 is 5. We have to use v first and we write sine 4 pi t. Then we differentiate the u du by dt, and the differential of time is t. T is just a dt by dt is 1, so we have write 1 plus 5 and now is u, so t comes here, and now we have to differentiate the sine 4 pi t. So the sine 4 pi t, the differential of sine 4 pi t is cos 4 pi t, so we write cos 4 pi t. Then we have to differentiate the angle 4 pi t. So the differential of 4 pi t is just 4 pi. So we can say 4 into 5 is 20. So this is 20 pi t and this is cos 4 pi t. So this is the equation that we have in milliamperes. So we are asked to calculate at 0.5 seconds. So we put 0.5 in place of t. सो व्हेन हमने इसकी जगह पुट किया 0.5 पुट किया टाइम की जगह पे. सो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 5 साइन 2 पाई टी, एंड हमारे पास इधर आया 10 पाई कॉस 2 पाई. बेसिकली हमने यहाँ जब 0.5 पुट किया तो ये 4 था वो हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास जो 10 था वो 20 था वो 10 में कन्वर्ट हो गया. दिस इज़ नॉट 5, दिस इज़ नॉट 5, दिस इज शुड बी 2.5. 2.5 साइन पाई टी, साइन 2t, 2.5 साइन 2 pi, because when we put 0.5 here, so it becomes 2. So 2 pi remains here. As we all know, sine 0, sine pi, sine 2 pi is 0. So this becomes 0 here, and cos this is 10 pi and cos 2 pi, so it becomes cos 2 pi. At every pi cos becomes 1, so it becomes 1. So 10 pi is this one, 10 pi is here, and this is the answer of 31.42 milliamperes. The next example is determine the total charge entering a terminal between t is equals to 1 second and t is equal to 2 seconds. When we have a time between 1 second and 2 seconds, we call integration. We have to do integrate. So we have to determine the total number of charge. If we have a current passing the terminals, I is equals to 3t square minus t ampere. So as we know that I is equals to dq by dt. So we can write dq is equals to I dt. So we can have integration both side, integration I dt. So this is cancelled, so we can say q is equals to integral of I dt. Okay, so we have q is equals to integral of I dt, and as we know that the interval between 1 second to 2 seconds, so we can see here this is 1 second and this is 2 seconds. So the integration of 3t square, we have to t square is equals to t cube divided by 3. So when we divide by 3 is 3 and 3 cancels, so we can say
3t cube divided by 3 and minus t square divided by 2. So this 3 and this 3 cancels, so it becomes t cube minus t square over 2, and then we put, first we put 2, then minus, and then we put 1. So when we put 2, so the answer is 8, 2 cube is 8, and minus 2 square is 4 divided by 2, it becomes 2, so 8 minus 2 is here, and then we put the lower limit, minus, the lower limit is 1 cube is 1, and the 1 square is 1, so it becomes 1 minus 1 upon 2. So we can solve it, and we use the answer is 5.5 coulomb charge. The next example we want to show here is the current flowing through an element. We have different time interval, we have a different equations for the current. For 0 to 1, the current is 2 ampere, so we can say like this. This is interval 0, this is interval 1, and this is interval greater. So for this is the current, this is current, and this is time. So for 2, this is 2 ampere. So for 2 ampere, the current is constant. Then the current is a function of 2 into t square, and we know that the t square is exponential, so it increased after every, so it will increase like this, that for 2 seconds, so the answer becomes around 4, so it becomes 4 into 2, it becomes 8. So at 2 seconds this becomes 8, at 3 seconds this becomes 9 into 2, this becomes 18. So this is non-linear function. I just want to show you this is non-linear function. So and we want to calculate the charge. So what we have to do, so we just split the same, that we, as you know, that q is equals to integral I dt, right? So we can say that from 0 to 1, this as we from this limit 0 to 1 interval, the time is constant, so we just write t because I is 2 only, is a function, is not a function of any time, it's just a constant, so it becomes 2. For 1 to 2 interval, we write t 2t square, as you can see here, 2t square. So the integral of t square is t cube over 3. The limits is 0, 1 to 2 and 0 to 1. So we put 1 to 0, it becomes 2, so it becomes 2 into 1 minus 2 into 0 plus, and the 2t cube is around, when you put 2 in here, so it becomes 8 into 2, 16, 2 cube and divided by 3 minus, and we will put 1, so it becomes 2 into 1 and divided by 3. So this becomes 2 plus, this is 2 from here, plus 16 from here divided by 3 minus 2 divided by 3, it becomes 6.6 coulomb. Another example is 1.6, that you are asked to do the calculation of the, determine the current when we have different q. So I is equals to dq by dt. Okay, so when we have either dq by dt, they have to calculate the current, sorry. So we can differentiate this one. When you differentiate this one, it becomes 3 and the constant becomes 0, so we just write 3 ampere. When we have to differentiate this one, it becomes 2 becomes down, so it becomes 16t, and when we differentiate this one, this becomes 4 and the constant becomes 0, so it becomes 6t plus 4 ampere. When we have to differentiate this one, so 3, the differential of e minus t, so it becomes e minus t, differential is e minus t, then we differential about minus t is equal to minus 1, so it becomes 3. So I can write here for your explanation, 3 e minus t, the differential of e minus t is e minus t,
Then we differentiate the inner one, minus t. The minus t, the differential is minus 1. Minus, then we have 5. Then e minus 2t, e minus 2t remains same. Then the minus 2 becomes minus 2. So we can say that minus 3 e minus t, minus 3 e minus 3, minus minus plus, and plus 2 5s are 10, and 2 5s are 10, and this becomes e minus 2t. So we have nanoamperes. As we just use the nano, pico, microamperes, let's just use the factors as is given by the coulombs. And similarly we have tan sine 120 pi t. So when we have tan is a constant, tan remains same. Sine 120 pi t, as we know that sine, the differential of sine is cos, so cos 120 pi t, but because it's the function of time, so we have to differentiate the inner part and theta as well. So 120 pi t, the differential of is 120 pi, and we can say 120 pi multiplied by this one. So we can write again, I'll show here, tan cos 120 pi t. Okay, so this is the cos 120 pi t, and then we have to differentiate the 120 pi t. So 120 pi t is 120 pi. So 120 into tan is 1200. Pi is remains same, and cos 120 pi t is just comes as is. So the next one is around qt is equals to 20 e minus 40 cos 50 t microcoulombs. So this is, you can say, u into v again, because there are two t functions are there. So we have to differentiate like this. So first you can say like this, 20, we have 20, so we can cos 50 t is remain same. Then we have e minus 40, e minus 40 will come same, and then minus 4 because of the upper part. Similarly, then we have plus sign. Then we have another one is 20 e minus, the u become u will same, u remains same. Now we have a differential of v, the cos 50 t, the differential of cos 50 t, the cos 50 t is minus sine 50 t, and the angle is 50, so we can say 50 multiplied, because 50 t, the differential of 50 t is 50. So what we do, just because as we see that this e minus 40 is on the left, the first expression, and the second expression also we have e minus 40, so we just take a common e minus 40, and we take a minus sign as a common outside, minus e minus 40. So the 4 into 20 is 80, cos 50 t remains same, the plus, as we know that this is minus, as we have minus sign here, plus minus is minus, and then when we take e minus 4 minus, we take a minus out, take a common minus out, so this becomes plus, this again become plus. I repeat again, so when we have minus into plus, it become minus, and when we take the common minus common out, so the inner becomes plus. So 20 into 50 is 1000, sine 50 t is there, and microampere is this one. So I hope you understand this example. Another example, now we have examples of calculating the charge from flowing through a device. If the current is, we have different currents, initial charge values we have, that initially the charge value is before starting at 0, this is 1 coulombs, at 0 time it becomes 0 coulombs, and 0 time it becomes 2 microcoulombs. Different initial points of the charge we have given, and different current equations we have. So इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि आई टी इज इक्वल टू 3 एम्पेयर इज अ कांस्टेंट. सो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इंटीग्रेशन किया, सो द कांस्टेंट 3 एम्पेयर, सो एज वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt, what is the integration, is becomes 3t divided by 1, right? So we can say this 3t plus this plus 1, because at the initial we have 1 coulomb, so we just add 1 coulomb.
So the final answer becomes 3t plus 1 coulombs. So the second one is around 2t plus 5, and we can integrate this part, becomes 2t square over 2 plus 5t. So the divided by 2 becomes cancelled. So this becomes just a t square. So you can say like this: 2t square divided by 2 plus 5t. So this one divided by this one becomes t square plus 5t, and the initial will 0 becomes, so no means for adding this one. So just if you add it becomes 0 as well, so it becomes t square plus 5t. So in the next example we have this 20 cos 10t plus pi by 6. So we can differentiate. 20 is constant, 20 is even same. The cos integral is, when we cos integral is sine, so we will say sine 10t plus pi by 6, as we can see here. Then the differential of this we will divide by the whole equation. So the differential of this equation is the 10t, the differential is 10 only. So we can say 20 sine 10t plus pi by 6 divide by 10. So this becomes, this cancels, so it becomes 2. So that's one becomes plus 2 coulombs. So we can say that we can take the 2 common here. So we can say that 2 sine 10t plus pi by 6 plus 1 coulomb. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है कि हमारे पास आई जो है वो आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू 10 पावर 10e minus 30t sin 40t ampere. So let's try to solve this question. हमारे पास हमें आई गिवन है, हम ये कह सकते हैं q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ टी इंटू डी टी. सही, हम कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 10 e पावर माइनस 30t एंड साइन 40t dt. इस क्योंकि हमारे अंदर इसमें दो टाइम फंक्शन आ रहे हैं, तो ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा dv हो जाएगा. u dv का फॉर्मूला से निकल लगेगा. तो जो फॉर्मूला है वो u dv का वो है vu माइनस इंटीग्रल v du. यू कैन से uv माइनस इंटीग्रल v du. तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 10 e की पावर माइनस 30t into, so dv, we have dv, so if you want to find v, so we have to integrate sin 40t. तो sin 40t को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस cos 40t डिवाइड बाई 40 माइनस इंटीग्रल v आ गया, v हमारे पास क्या है माइनस cos 40t डिवाइड बाई 40. अब हमें यहाँ पे लाए du मीन्स हो गया u को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो हमारे पास आ जाएगा 10 e की पावर माइनस 30t इंटू डिफरेंशियल ऑफ माइनस 30t इज माइनस 30, माइनस 30t.
सो हमारे पास इसका नेक्स्ट जो हो सकता है वो ये है कि तो काइंडली बी पंक्चुअल फॉर दीस काइंड ऑफ लेक्चर्स, क्योंकि मैंने कहा ना, देखो मेरे लिए मेहनत डबल हो रही है अगर तुम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करो। मैं पहले बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, -10 मेरा आपके लिए बनाऊँगा, उसको रिकॉर्ड e करूँगा, power फिर उसके बाद आगे यहाँ पे -30t बैठूँगा 1 घंटे के लिए और ये इंतज़ार into करूँगा कि आप मुझसे cos सवाल करेंगे वो वीडियो देखने के 42 बाद, divided by ठीक है। तो अगर आप मेरा 40 टाइम वेस्ट minus करेंगे 1 घंटा पूरा, आप half वीडियो देख के नहीं आएंगे और आप बोलेंगे सर अच्छा ये plus एक आध बच्चे वीडियो देख के आएगा, 30 सवाल divided करेगा by और फिर 40 मैं वेट करता रहूँगा कि दूसरा बच्चा सवाल करे। 10 तो इस तरह अगर मेरा टाइम वेस्ट होगा 30t तो फिर आपके लिए ही बुरा होगा, मैं आपके मार्क्स 40t ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि क्लास में पंक्चुअल रहें, टाइम अब पे क्लास में इसके अंदर फिर वही इशू आ गया UV क्वेश्चन वही बच्चा करेगा so जो बच्चा sorry रिकॉर्डिंग this should देखेगा, be minus क्योंकि देखो ऐसा not नहीं है plus कि सिर्फ आपने रिकॉर्डिंग देखी और आपका काम खत्म हो गया। रिकॉर्डिंग के साथ ही साथ अगर तुम आज के भी देखोगे 10 e minus बोर्ड में तो नीचे 30t प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो जो cos रिकॉर्डिंग होगी लेक्चर 40t की उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि प्रैक्टिस 40 क्वेश्चंस करने कैसे हैं। minus और लाजमी सी बात है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकता है आपसे सारे हो जाए लेक्चर देखने के बाद, हो सकता है कि आपके 30 लेक्चर 30 देखने के बाद 40 भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ना हो we रहे have हो। 10 हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में सवाल कर लोगे तुम मुझसे लाइव सेशन, सर ये वाला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, ये सवाल का जवाब आपने e बताया minus था, ये नहीं आया। 30t फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शो sin 40t divided by 40 plus 30 फाइल आ रही होगी divided by 40 integral of देखो मैं शेयरिंग शेयरिंग करता हूँ 10 sin right here 40t multiplied by e की power minus 30t dt ये देखो ये तुम्हारे को वर्ड फाइल आ रही ये है दिस सामने, ये कैसे आ गया 30 और 40 बाहर कैसे आ गया। बेसिकली इसको आप देख सकते हैं कि साइन 40t का जो इंटीग्रल है जैसे 40 ये 40 बाहर लिख लिया और माइनस 30 ये जो है ये भी बाहर आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस होता है, फॉर्मूले में माइनस होता है, तो माइनस 30 मल्टीप्लाई माइनस इस बिकम प्लस 30। शो नहीं हो रहा। सो अब हम इसको अब इस साइड को अगर आप देखा जाए, अगर इस साइड को आप देखें तो आपको महसूस होगा ये वही आ गया हमारे पास Q। इनिशियली हमारे पास Q जो था वो यही था ना 10 e की पावर माइनस 30 साइन 40t, तो हम इसको Q लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो हमारे पास किस तरह क्वेश्चन हो जाएगी, लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू माइनस 10 e माइनस 30t डिवाइड बाई 40 तो ये वर्ड फाइल है, cos वर्ड फाइल के अंदर 40t ये आपके ब्लैकबोर्ड पे minus आप डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर, 300 ठीक है। divided by इस 1600 तरीके से एक फाइल वहाँ पे अपलोड कर लेंगे minus 30t और फिर आप sin 40 अटेम्प्ट करेंगे, जो हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होंगे उनका आप t minus दूसरे सवाल कर लिया करेंगे। 900 divided by 1600 इस sin तरीके से हमारा कोर्स जो है वो चलेगा। जी बेटा उमर, आप जी। कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली चैट में लिखें। so 30 into 30 900 40 into 40 और 1600 सवाल माइनस प्लस माइनस here आ गया, और जिस तरह हम ये देख सकते हैं 30 into 10 300 40 into 40 1600 e minus 30 sin 40t remains same, this one is remains same। so हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह Q बिल्कुल बेटा लिख उमर सकते हैं यहाँ पर माइनस 900 डिवाइड बाई 1600 Q है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस 900 डिवाइड बाई 1600 Q is equals to 10 e minus 30t minus cos 40t minus 30
1600 साइन 40t। ये बेसिकली मैंने जब जैसे 10e⁻30 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 आ जाता है, सब देख सकते हैं 1 आ गया। और यहाँ से मैंने बेसिकली जब 10e⁻30t कॉमन लिया तो यहाँ 30 रिमेन बचा, यहाँ 30 आ गया। So simplify, so you can say that Q बेसिकली जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1600 यहाँ चले जाएगा और 900 Q हो जाएगा। तो 1600 प्लस 900 Q, when we take a Q common, so we can write like this: 1600 divide by 1600 plus 900. I hope you understand. 10 minus 30t cos 42 40t divided by 40 minus 30 divided by 1600 sin 40t. So when we multiply it, so we can have 10 30t 1600 plus 900 minus 40 cos 40t minus 30 जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1600 को इससे तो 16 और 40 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 रिमेन बचेगा, तो 40 यहाँ आ गया क्योंकि ये तो कॉमन ही है, ये तो बाहर ही है। और जब हम 1600 को 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 30 रिमेन बचेगा, तो 30 यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये इसका हमारा Q सोल्यूशन है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अगर हम देखें पीछे तो हमारे पास Q का इनिशियल पोजीशन 0 है, तो इस 0 को ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 0 है, तो ऐड करने के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास 1.7 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर ली।